हेलो गाइस, वेलकम टू मोटोबीम। टुडे वी आर डूइंग द माइलेज टेस्ट ऑफ द स्कोडा काइलैक। दिस इज द 1 लीटर मैनुअल। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आंसर करूंगा, ट्राई करके ऑटोमेटिक भी चला लूंगा। सो लेट्स सी हाउ मच डज दिस वन रिटर्न। गेट्स अ 1 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल। सो क्या एक्सपेक्टेशन है, लेट मी नो कमेंट्स। साथ ही साथ चलो देखते हैं यार बाकी सब। Something noticing on the first slide, I can definitely say this, that it does not feel any different than the Slavia or the Kushaq. It feels very premium, and the overall interiors, it's actually quite nice. Now design language is something that you guys have to decide, do you like it, do you not like it. But design को अगर आपको अपने साइड पे रख दिया, the functionality for my height, I've kept the seat height to the highest level right now because the architecture and everything, it makes you feel and sit a little bit lower. So मैंने सबसे seat height top रखी है. If I go down, I can definitely see of what's ahead, but right now this is how low I can go. Full race car, go kart वाला feel आ रहा है यहाँ पे. So this is quite nice. You will be buying the Kailak actually for your family, maybe for yourself. So if family is a priority and this is your first family car or however it is, प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे. एंड द स्पेस फ्रॉम माई नी टू द सीट, दिस इज़ माई ड्राइविंग पोजीशन. मैंने थोड़ा सा हाई रखा है, नॉट दैट फ्रंट. इट इज़ कंफर्टेबल एंड स्पेशियस. लीनिंग इन, इट इज़ डेफिनेटली नाइस. एंड यहाँ पे 5 feet 6 inch के बंदे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही. हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इज़ गुड इनफ. एंड देयर इज अ स्कूप विच इज़ हियर, सो डेफिनेटली नाइस. इफ आई पुल दिस आउट, for 2 people at the back, this is a very comfortable place for a car of this size. So if you are looking for a family car, problem नहीं होगा. 3 लोग बैठ पाएंगे, चलिए वो भी देखते हैं. I am already seated inside यहाँ पे in the third row, no not the third row, the second row of the Kailak, and 3 people inside. Well, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है because I'm pushing these guys a little, but for 3 people it is spacious enough, it is comfortable. So if I have a family around या आप किसी को लेके जाने वाले हो, अब ले लीजिए, हाथों पर ले लीजिए बिंदास. देखा, कंफर्ट ढूंढ लिया इन्होंने. सो अरे और जगह हो गया मेरे को. नाउ आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल. सो येस, दिस इज अ गुड स्पेस टू बी. फैमिली के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा. 5 people, easy, very easy. You get 2 AC vents at the back. These are providing good enough air, and plus you get Type C charger. अब फ़ोन का होल्डर तो है नहीं, बट फ़ोन का सोल्यूशन यहाँ पे है ऑन द सीट. यू कैन जस्ट पुट इट इन, हो गया. चार्जिंग करो, लगाओ, चिल करो यहाँ पे. दिस इज अ वेरी नाइस, कंफर्टेबल फॉर द पैसेंजर प्लेस. This one is a 1 liter TSI that produces 114 bhp and 178 Nm of torque, while the Kailak weighs close to 1630 kgs for the manual and 166 kgs for the automatic. Let's see how the performance is. Completed close to 26 kilometers right now, almost 27 होने को आया. You can definitely say that this one has been returning quite nicely at 12.7 kilometers per liter, and I guess it will improve because I am on the highway now. So mileage expectations from a 1 liter TSI, I am expecting 15 के आसपास तो mileage मिल ही जाएगा. Mix which has traffic as well as some highways too. A little bit more on the highway part, थोड़ा extra मिलेगा, मतलब you can say 60-40. But good chance. See, open roads again. Now I am getting on to the worst of roads. Let's see if this one can tackle it. I'm pretty sure this one can. The ground clearance number is right down on your screen, and that is how this one is able to tackle without scraping the front or any. Oh, that was a big bump and it just took it. And oh, all of these movements, horizontal, vertical, suspension is set up very, very nicely. Plus taking on bad roads, no issues, zero issues, zilch. The rear stepped out a little. And we are through. So nice. Now it's a braking test. I'm reaching almost 80 to 90. Empty road मिल चुका है मुझे, and let's see how well the brakes are. It's only get discs at the front and drums at the rear at 80, and let's
stop. After clocking close to 55-57 kilometers, mileage has dropped down to 9.4-9.5 kilometers per liter. The main reason being that I've got a lot of traffic during my travel time, because if you notice, just for 50 kilometers I spent close to 2.5 hours, or actually more than it, 2 hours 40 minutes. So I've been testing the car, I've got a lot of traffic, and in this scenario getting close to 9.5 kilometers per liter is a very good number. Let me see if I can improve this by heading back to the resort with the manual petrol. Apart from this, I don't think so there's really any problematic points. This car feels very stable. When you turn, the rear follows, and that is one thing for sure. Taking the beaten path, this one just handles it very easily. इसमें और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फैमिली सीटिंग के लिए, इसके लिए मैंने जैसे आपको टेस्ट करके दिखाया कि बैठने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी. देयर इज इनफ एंड एम्पल स्पेस, देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम. ऑल्दो द सेंटर टनल विच इज़ देयर विद द एसी वेंट्स, वहाँ पे इफ देयर इज समवन विद शू साइज ऑफ मे बी से मोर देन 6 or 7, उनका पैर हिट होगा. दैट इज़ द ओनली कंसर्न आई हैव, बट अपार्ट फ्रॉम दैट not really as much. So we did close to 72 kilometers only, क्योंकि अभी और एक गाड़ी चलानी है and we are driving internal roads. बहुत सारा ट्रैफिक था. It's got close to 5.68 liters at the first auto cut. Calculator किया 72 divided by 5.68, which is 12.67 kilometers. Although the MID shows 10.1, 12.67 kilometers even after testing, मतलब through rigorous testing, braking, acceleration सब करने के बाद भी 12.67 is the mileage that I'm getting from the 1 liter TSI, which means on the highway plus इसका mileage it will go higher than 14-15 आराम से. कंपनी claims 18 तक जा सकता है, पर 15 तो आपको मिल ही जाएगा. Let's test the automatic now and उसका mileage test वगैरह क्या क्या है. Let's check it out. And now I'm driving the automatic. The best part over here is that I don't have to keep shifting all the gears. However, I am hearing a lot of engine noise because कभी कभी automatic थोड़ा pull करते तो ये हल्का सा आवाज़ आ जाता है. Ooh, that was big rumblers and I could actually feel it. Pushing it beyond 80. And I can hear some amount of engine noise, but that's about it. ब्रेक का फीडबैक जो है वो मैनुअल में बहुत अच्छा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इन दी ऑटोमेटिक इट फील्स अ लिटिल बिट स्पॉन्जी बिकॉज द ब्रेक इज़ एक्टिंग फॉर स्लोइंग डाउन, द ब्रेक इज़ एक्टिंग जो फीडबैक आता है टू डाउन शिफ्ट टू द गियर्स, सो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस देयर. यार ये 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक का माइलेज टेस्ट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज I am running a little late and I have to go to the airport right now directly, plus create some more content. So बोलते हैं ना 4 से 6 घंटे के अंदर दोनों गाड़ी का रिव्यू प्लस माइलेज इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट चैलेंजिंग. एंड देन अभी देखना, अभी है ना ये रम्बलर्स के ऊपर से लेके जाएंगे एंड वील सी हाउ द सस्पेंशन एक्ट्स. बाउंसी लग रहा है, क्या लग रहा है, यू गाइस टेल मी. आवाज़ आया, थोड़ा लगा. सस्पेंशन इज़ टेकिंग एवरीथिंग. इट इज़ नॉट टू हार्ड, नॉट टू सॉफ्ट. इट हैज़ अ बैलेंस बिटवीन, बट पीछे से ना अच्छा खासा फीडबैक आ रहा है. सो इट हैज़ अ बाउंस, little bit of a bounce back effect if you don't have any luggage or anyone sitting behind. Apart from that, not really a problem at all. The horn, however, I don't like at all. This car is not horny at all. What? देखो, okay. Not the traditional Skoda horn that I was expecting, but yeah, it's there. I actually really like the Kayak for the performance, for the fun it offers. It is a very nice car, very fun to drive, and if you have the budget from 9 lakh to 17 lakhs for the top end variant, you will definitely like it. But then the base model manual makes a lot of sense. 17 lakhs for the top end automatic might be a little extra, but then again it's the price that you pay for. However, this is a very good car. Skoda has been pricing their cars a little on the higher side, and this is definitely hitting that high mark. Do you like it? I definitely like it. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.